Malerkotla feels like poetry in real life. In this historic city of Punjab, the azaan, shabad, kirtan, and the temple bells rise together, not in competition, but in harmony. Here, festivals are shared, grief is collective, and faith builds bridges instead of barriers. Even during the Partition of India in 1947, Malerkotla chose peace. That spirit continues to define the city today, a powerful reminder that unity isn't outdated, it's timeless. Tucked into Punjab's fertile plains, Malerkotla stands as a rare, living symbol of communal harmony. For centuries, this historic town has woven faith and traditions into a shared way of life, where peace isn't preached, it's practiced. At its spiritual heart is the 600-year-old Baba Haidar Sheikh Dargah, dedicated to Hazrat Sheikh Sadruddin Sare Jahan. Every Thursday, Hindus, Muslims, Sikhs, and Christians gather here, not as separate communities, but as one, united in prayer and devotion. जो ये दरगाह है, इनका बाबा जी का नाम है शेख सदरुद्दीन सदर जहां। वैसे इनको बोला जाता है बाबा हैदर शेख के नाम से, और ये 600 साल पुरानी दरगाह है। और बाबा जी अफ़गानिस्तान से आए थे। वीरवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ जी, हर वीरवार को बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं इनके, और सबकी ये सुनते हैं। Just a short walk away stands the serene Hadinara Gurdwara, a sacred space woven into Malerkotla's soul. It honors the Nawab's courageous stand against injustice during the Mughal era, a moment that etched the city into Sikh history with deep respect. Today, the Gurdwara remains open to all, welcoming every visitor, regardless of faith, with the same spirit of dignity and grace. ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Adding to Malerkotla's spiritual mosaic is the vibrant Kali Mata temple, where devotees, especially on Saturdays, offer nariyal, chuni, and prasad to the goddess. What makes it special isn't just the ritual, but the people. Visitors from every community come here in quiet devotion. In Malerkotla, different faiths standing side by side isn't extraordinary. It's simply everyday life. सारे लोग के, सारे समाज के जो श्रद्धालु आते हैं, जिसमें कि अपने हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे लोग ही यहाँ पर 20% मुसलमान भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और जाट भाई, सिख, बानिए सारे ही यहाँ पर बड़ी श्रद्धा लेकर के काली माता को मान करके बड़ी श्रद्धा से शनिवार को तो बहुत रश के साथ में यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारा सामान, नारियल, चुन्नी, प्रसाद जो भी यहाँ चढ़ाया जाता है बड़ी श्रद्धा से चढ़ाया जाता है। As India celebrates its diversity, this small Punjabi city offers a quiet but powerful reminder. Unity works best when it's lived daily, not just spoken about. Malerkotla is more than a dot on the map. It's a living story of peace, shared faith, and the lasting strength of coexistence.